students, we will discuss area problem from exercise 10 of your book Elements of Mathematics. Y equal to e to the power x, y is equal to 0, x is equal to 4 and x is equal to 2. What is the value of e? E value is nearly equal to 2.71. So we first draw the figure of y is equal to e to the power x. Y equal to e to the power x का figure को draw करिए. x y रो टेबल नउची. x को 0 नेले e to the power 0 is 1. x को 1 नेले e to the power 1, e to the power 1 nearly equal to 2.7. x value 2 नेले e square 7.29. This is e square. And if you take minus 1, e to the power minus 1 by e, 1 by 2.71 means 0.3. So let us draw the graph. This is x axis and this is y axis. It is 1, it is 2, here is 1, here is 2, and this is minus 1. 0, 1 is a point. 0, 1 is a point. 1, 2.7. In 1 it is 2.7. Here minus 1 रे 0.3, minus 1 रे 0.3. So graph will be like this. एमडी ग्राफ का आसीबो देखो तापरे ए y is equal to 0, y is equal to 0 means x axis y is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 2. This is a line x is equal to 2, and this is another line x is equal to 4. So which area is now to be determined? This area to be determined. एई एरिया रो वैल्यू बाहर करियो को छते हने नहीं तेणु वर्तमान ए बी सी डी रो एरिया बाहर करियो को अछि. अच्छा वर्तमान को डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते एटा x इज इक्वल टू 4 लाइन तो डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हबो 2,0. अच्छा x रो वैल्यू 2 नेले y रो वैल्यू केते x रो वैल्यू 2 नेले y रो वैल्यू e स्क्वायर तो ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट आसीबो 2, e स्क्वायर. सेमती x रो वैल्यू 4 तो एटा हबो 4, e स्क्वायर. तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस अछि. तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, सो एरिया ऑफ ABCDA, एरिया ऑफ ABCDA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. कर्व एंड x एक्सिस भीतर एरिया, सो फार्मूला y dx. So it is this point is 4 e to the power 4, 2 e to the power 2, right? Now the area between the curve of x axis कहिछि, so the area formula is y dx. And what is x varies? x कोड कोडी वैरी करबो कर्व रो एंड पॉइंट रे x कोऑर्डिनेट को खोजिबा को पड़िबो. x कोऑर्डिनेट एटी 2 अछि, एटी 4 अछि, so integration from 2 to 4 y dx, that is equal to integration from 2 to 4 e to the power x into dx. e to the power x ro integration e to the power x, and it is from 2 to 4 means e to the power 4 minus e to the power 2. e to the power 2 common, so e to the power 2 minus 1. This is the answer of the first bit. So eta first bit answer asila. Come to second bit. Y equal to x square. Y equal to x square. आमे टेबल नबा y is equal to x square. y equal to x square रो टेबल, x y रो टेबल लियो. x को 0 नेबी, 1 नेली, -1 नेबी, 2 नेबी औ -2 नेबी. x को 0 नेले y एला 0 स्क्वायर, 1 नेले 1 स्क्वायर, -1 नेले -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -2 रो स्क्वायर भी सही 4 आसीबो. So now draw the graph. It is 1 2 -1 -2 1 2 3 4 all this. 0 रे 0 गोटे पॉइंट आसीबो एठी, 1 रे 1 गोटे पॉइंट आसिला, -1 रे x y एला -1 plus 1, तो कर्व will be like this. It is a parabola, right? वर्तमान आउट कोन नबा पडियो मते कोन नेबी. लुक एट x रो वैल्यू 0, y रो वैल्यू 0 नेबी, y रो वैल्यू 0 माने x एक्सिस, x रो वैल्यू 0 हेले y एक्सिस, एटा हला y is equal to 0, एटा हला x is equal to 1. सो रफली हमें सेटा ड्रा करछंती. तो एतिक एरिया हमकु डिटरमिन करबा अछि. दिस एरिया इज टू बी डिटरमिन हैला. तो एई ओरिजिन नो कोऑर्डिनेट आसीबो 0 0,
এই পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট আসিব 1 1 x ৰ ভ্যালু 1 x ৰ ভ্যালু 1 পুট কৰিলে y কেতে 1 সো 1 1 তাহলে এরিয়া o a b o ର এরিয়া हमको बाहर କରିବାକୁ ଅଛି एरिया ऑफ o a b o equals to integration of y dx or x dy कर्व आउ x एक्सिस रे एरिया सो फार्मूला इज y dx x कोडी कोडी बाहर करिवो x 0 ରୁ 1 बाहर करिवो 0 to 1 is equal to integration from 0 to 1 y value is x square into dx it is x cube by 3 and it is from 0 to 1 1 cube minus 0 cube by 3 it is 1 by 3 এটিকে হবে आंसर come to third bit look at third bit is y xy is equal to a square xy equal to a square third bit xy equal to a square so what is y it is a square by x देखो x रो वैल्यू y पर a फॉर्म रे नेबी x रो वैल्यू मुड होची a x रो वैल्यू केबे नेगेटिव नै परिबिनी नेगेटिव नेबी पॉजिटिव ने बोथ भी नहीं परिबिनी नो x रो वैल्यू a नेले y रो वैल्यू हबो a स्क्वायर बाय a 2a नेले हबो a by 2 3a नेले हबो a by 3 आ a by 2 नेले केते हबो a by 2 नेले 2a हेबो सेमती जति कि नेगेटिव नेले सेति कि पॉजिटिव नेबी माइनस a नेबी माइनस 2a नेबी माइनस 3a नेबी माइनस a by 2 मध्ये नै परि हैला तो एठी असली x रो वैल्यू a नेले y रो वैल्यू a रे पोटे a 2a इक्वल इक्वल नेबी 3a एठी a 2a एमती नेली a रे a गोटे पॉइंट a by 2 रे 2a गोटे पॉइंट 2a नेले a by 2 तो कर्व विल बी लाइक दिस सेमती जदि नेगेटिव नेबी बाहरिबो नेगेटिव रेट माइनस a बाहरिबो माइनस a by 2 बाहरिबो ऑल दिस तो कर्व विल बी लाइक दिस एटा को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहंती सर टिके हाइपरबोला रे पढैतिबे रेक्टेंगुलर दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यू हैव टू डिटरमिन द एरिया बिटवीन अल्फा बीटा x रो वैल्यू आ y इज इक्वल टू 0 तो एटी हमें y इज इक्वल टू 0 माने x एक्सिस नेले एटा गोटे मन इच्छा नेले अल्फा पॉइंट एटा नेले बीटा पॉइंट सो दिस एरिया इज टू बी डिटरमिन एई एरिया हमको बाहर करिबार अछि नै कि एई एरिया बाहर करिबा एई पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते अल्फा कमा x रो वैल्यू अल्फा नेले y रो वैल्यू a स्क्वायर बाय अल्फा एई पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते आ बीटा कमा a स्क्वायर बाय बीटा नहीं so this area this is p q r s area of p q r s area of p q r s equal to integration of y dx because the curve and x axis area formula is y dx so y dx x varies from alpha to beta x varies from alpha to beta curve end point को जिबा this is equal to integration from alpha to beta a square by alpha a square by x into dx a square into log x and it is from alpha to beta a square into log of beta minus log of alpha this is equal to a square into log of beta by alpha this is the third bit answer come to next bit question y equal to sin x y is equal to 0 and x is equal to pi by 2 fourth bit y equal to sin x x y रो टेबल लियो 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi sin 0 0 sin pi by 2 1 sin 2 sin pi 0 sin 3 pi by 2 minus 1 and sin 2 pi is 0 so we can draw the curve it is pi by 2 pi 3 pi by 2 and it is 2 pi it is 1 0 0 रे गोटे पॉइंट pi by 2 रे 1 गोटे पॉइंट pi रे 0 3 pi by 2 रे -1 2 pi रे 0 we determine the area between y is equal to 0 y is equal to 0 किए एटा x axis
x is equal to pi by 2 this line. So this area is to be determined. This area is to be determined. And this coordinate is 0, 0. And this coordinate is pi by 2, 1. X no value pi by 2 put kale y kete asibo 1. So area of OABO, area of OABO, that is equal to integration of y dx, and x varies from 0 to pi by 2, x coordinate to x coordinate, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin x into dx. Sin x integration is minus cos x, and it is from 0 to pi by 2, right? That is equal to minus of cos pi by 2 minus cos of 0. Cos pi by 2 0, cos 0 to 1. So final answer 1 square unit. This is all about the question 1 of the first exercise 10. Thank you.